Now, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today ordered to remove the loudspeakers from temples and mosques, irrespective of the religious site, but it's now become a loudspeaker dangal. From Uttar Pradesh, it has reached now Rajasthan as well. What happened in Rajasthan? In Jaipur city, loudspeakers were put outside one mosque. Despite many Muslim clerics urging people not to offer Namaaz on the road, many were seen coming out on the streets as well. Here's what happened in the Jaipur city, and in many ways, a connection to what's been happening in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is getting quieter. In just the last few days, thousands of loudspeakers have been removed across the state in crackdown on noise pollution. The Yogi government's move has won praise from MNS chief Raj Thackeray, who's been campaigning to stop Azan being played on loudspeakers in Mumbai. But a BJP ally who's a minister in the Modi government has criticized the Uttar Pradesh government. तो मेरी पार्टी जो है जहाँ मस्जिद है मस्जिद का संरक्षण करेगी। अगर कोई भोगे निकालने के लिए आते हैं तो इसका विरोध मेरी पार्टी के लोग करेंगे। और मेरी पार्टी ये भी मानती है कि जो मुस्लिम समाज के जो मौलाना है जो उल्टी सीधी बात करते हैं उन्होंने भी मतलब शांति की भाषा करनी चाहिए। While Yogi's relentless campaigns continues in neighboring Rajasthan, politics has exploded after loudspeakers were set up outside a mosque in Jaipur. This is the difference between the Yogi model, which applies the law without fear and favor on everybody equally, and the difference between the secular Dhungi model that we see in Maharashtra or in Rajasthan. Now, on the one hand, these people have been imposing sedition law against those who want to chant Hanuman Chalisa in public. But on the other hand, one particular vote bank, for the vote bank, one community is allowed these privileges, whereas the rules are violated, the Supreme Court guidelines are violated, and all kinds of vote bank veto is given to one particular community. हम सबको अच्छा लगता है ये योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े दंगे की साजिश से बचाया है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम किया, तो पूरे देश के लोग उनको बधाई दे रहे हैं। अब बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। Loudspeakers are noisy, but the decibel levels of the politics around it are reaching a higher pitch every passing day. The opposition claims crackdown on loudspeakers is selective, a charge that the BJP government, like Yogi's, totally rejects. Bureau Report, India Today. Let's go across now to Jaipur city. Joining me in this live telecast is my colleague Sharad Kumar. Sharad, because it's such a sensitive time as well, एक कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं कि ये जो मॉस्क्स पे या ये जो लाउड स्पीकर्स थे ये क्या सडनली आ गए बाहर और देयर वाज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट दैट पहले इन लाउड स्पीकर्स को कम करें। किस तरह से जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, द रेपरकशन इज ऑल्सो बीइंग सीन इन राजस्थान नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट स्टेट, हमें बताएं। देखिए पूजा, मैंने 20 सालों में 2 बार बीजेपी की सरकार और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार देख रहा हूँ। ये जो नमाज, अलविदा की नमाज हो या जुमे की नमाज हो, सड़क पर होती हैं। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि इस बार सरकार, कांग्रेस सरकार ने खास तौर पर लाउड स्पीकर में क्या बोला जाएगा इसका स्क्रिप्ट ले लिया था और बहुत धीरे स्वर में इंसानियत, मानवता, देश प्रेम, इस तरह के संदेश दिए जा रहे थे। मगर ये तस्वीर जो दिखाई दी जयपुर की सड़कों पर कि सड़क बंद रहे और वहाँ पर बाजार बंद रहा, पूरा जौहरी बाजार बंद रहा, हवा महल से लेकर और सांगानेरी गेट तक, ये तस्वीर एक तरह से दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पिछले 20 सालों से होता रहा, बीजेपी की सरकार में भी होता रहा। और मैं तो पिछले इसी महीने की 9 तारीख को देखा कि बाजार बंद थे और रामनवमी के जुलूस भी इसी तरह से निकले और मुसलमानों ने फूल बरसाए। मगर देश का इकोसिस्टम बदल गया है और जिस तरह से पूरा बहस चल रही हिंदू मुसलमान को लेकर, इसमें लाउड स्पीकर, सड़क पर नमाज पढ़ना एक बड़ा इशू हो गया है। अचानक से इस बार
ज्यादा बड़ा इशू कम से कम राजस्थान में देखा जा रहा है कि So Sharad, my added question to that is, क्या उत्तर प्रदेश की तरह कोई एक्शन नहीं लेंगे? क्योंकि इशू तो उठा है लाउड स्पीकर का, चाहे मस्जिद पे हो या मंदिर पे हो. Irrespective of that, Yogi Adityanath has brought down the loudspeakers. Do you think that is going to happen in the state of Rajasthan? How has Ashok Gehlot reacted to it? देखिए, अशोक गहलोत ने धारा 144 लगा रखी है, डीजे पर पाबंदी लगा रखी है, क्या गाना बजेगा और क्या बोला जाएगा इसकी स्क्रिप्ट पहले से तय होगी, ये सब लगा रखा है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि रामनवमी के जुलूस हो या फिर लाउड स्पीकर हो, नमाज को लेकर इस तरह की कोई पाबंदी कांग्रेस लगाने जा रही है. आज भी जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, कांग्रेस के विधायक भी नमाज पढ़ रहे थे और हमारी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण है और देखिए हिंदू जितने हैं सारे दुकानदार सामने खड़े हैं और हम लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं. तो उत्तर प्रदेश जैसी हमारी स्थिति नहीं है. मुझे लगता है कि बीजेपी इसको इशू बनाएगी और उत्तर प्रदेश के सामने राजस्थान को रखकर कोशिश करेगी कि देखिए यहाँ पर मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है और हम किस तरह से वहाँ पर already that's being said, Sharad. Very interesting. So the Congress government in Rajasthan is saying we are not going to go to the Uttar Pradesh way, and if this has been happening, it will happen. The loudspeakers will be put up. People will be out on the streets, even if some local clerics have said avoid on the streets for as long as possible. Very interesting what Sharad is telling us. Abhishek Mishra is joining me from Lucknow in Uttar Pradesh, where of course the big showdown is. Sharad, I request you to please stay on with me. Abhishek, so Rajasthan government is clearly defined. They're saying we are not going to take that model for now. How do you think it's turning out in Uttar Pradesh? Is the anti-loudspeaker drive still on? He's getting praises from Maharashtra, from Raj Thackeray. What is the situation right now? And today was an important day as of Friday. Tell us about UP. Well, certainly, Pooja, as far as the drive is concerned, it is going on with a rapid pace. And the government is producing a number. That number is updating daily basis. And the current number is about 37,000 loudspeaker, which has been removed. 55,000 is the number where the volume has got down. So that is an indication by the Yogi Adityanath government that whatever instructions have been given at the ground level to the district authorities, they are making sure that the loudspeaker is not disturbing the people, and at the same time the drive is not only conducted at the temples or mosques, everywhere it is evident, and the people are also cooperating. We have been in Varanasi, we have seen there how at the mosque the Namaaz which was held there was without the loudspeaker. People were actually supporting that cause, and also in Lucknow and other districts as well, Prayagraj, Kanpur, Meerut, everywhere this particular order has been taken very seriously. So the government is giving a clear indication that we have taken the action, we are trying to mobilize people, we are trying to talk to the stakeholders. They are cooperating with us. What about those other states? Important, Abhishek. What Abhishek is telling us in Uttar Pradesh, that there are many stakeholders from mosques or temples who by themselves are bringing the loudspeakers down, are supporting the decision. But just across a few states, Rajasthan says, we are fine. We don't want to adopt the Uttar Pradesh anti-loudspeaker model. Sharath is updating us on that. And we can only hope peace prevails and no inconvenience to anyone. Thank you so much, Sharath and Abhishek, for that live update from two different states.